Hello everyone. So let me start from example number 8. Example number 8 says that three consecutive integers are such that when they are taken in increased order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they added up to 74 means उसका सम होता है 74. So हमें क्या लेना है? We have to take three numbers and consecutive numbers. Consecutive means 2, 3, 4. तो हमने यहाँ पे गैस कर लिया consecutive numbers are x, x plus 1, x plus 2. तो हो गए हमारे three consecutive numbers. We have to multiply this all with 2, 3 and 4. Okay, so तीनों को 2, 3, 4 से multiply करें और उसके बाद तीनों का प्लस करें, so we will get the answer 74. Okay, so let me see. So here I solve the sum. Let the three integers are x, x plus 1, x plus 2. Okay, all three are consecutive. Now it says that multiply these three integers respectively 2, 3 and 4. Respectively means टर्न बाय टर्न, फर्स्ट को 2 से, अनदर सेकंड नंबर को 3 से एंड थर्ड नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करना है. सो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 2x, इसको 3 से और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया. इफ वी ऐड दिस ऑल वी गॉट द आंसर 74. सो फाइंड दिस थ्री इंटीजर्स. क्वेश्चन इज दिस. ओके, सो हियर आई ब्रॉट 2x प्लस दिस 3 प्लस answer is 74. Now 2x as it is. Now these 3 is going to multiply with these 2. So 3x, 3 multiplied by x, 3x, 3 multiplied by 1, 3 1 are 3, 4x, 4 2 are 8 is equal to 74. Now 2x plus 3x, 5x, 5x plus 4x, 9x, 3 plus 8, 11. Okay, now this 11 is going to right hand side, so it become minus 11. So 9x is equal to 74 minus 11 is equal to 63. So 9x is equal to 63. Now this 9 is going in division of 63. So 63 divided by 9. So 9 7s are 63. We know that. So x is equal to 7. So in the beginning, the three integers are x, x plus 1, x plus 2. So here x is equal to 7, x plus 1 is equal to 8 and x plus 2 is equal to 9. Example number 9. The ages of Rahul and Harun are in the ratio of 5:3. Ratio is given. So whenever ratio is given, so हमको उसको guess कर लेना है 5x and 7x. Okay, so present age of Rahul is 5x and Harun is 7x. 4 years later, the sum of their ages will be 56. Sum of their ages 4 years later means plus 4 plus 4. 5x plus 4 and 7x plus 4 is equal to 56. Okay, so let me see. Rahul and Harun's current age ratio is 5:7. So Rahul's age is 5x, Harun's age is 7x. 4 years later, Rahul's age is 5x plus 4 and Harun's age is 7x plus 4. So they said after 4 years their age sum is 56. So 5x plus 4 plus 7x plus 4 is equal to 56. So 5x plus 7x is equal to 12x and 4 plus 4 is equal to 8 is equal to 56. Now this 8 is going to right side, so it become minus 8. So 12x is equal to 56 minus 8. So 56 minus 8 we got 48. Now to find the x, this 12 is going to division of 48. 48 divided by 12. So we know that 12 4s are 48. So we got the answer x is equal to 4. Now in the beginning we see that Rahul's age is 5x and Harun's age is 7x. So x we got 4. So 5 4s are 20 and 7 4s are 28. So Rahul's age is 5 4s are 20 and Harun's age is 7 4s are 28 years. Okay, so this way we can find it. Now sum number 10. The number of boys and girls in the classroom are in the ratio of 7:5. Okay, boys in the ratio of 7 and girls 5. The number of boys is 8 more than the number of girls. Okay, जो boys number is 8 more. Boys है वो girls से 8 ज़्यादा है, 8 boys ज़्यादा है. Okay, दोनों का रेशियो कितना है 7 and 5. So 7x and 5x. 7x boys and 5x girls. एंड बॉयज कितने हैं 8 ज़्यादा है, 8
boys are more than girls. Okay, so here I solve the sum. Boys 7x and girls 5. Boys 7, girls 5. 7x 5x. Now this says that these boys है वो 8 ज़्यादा है. Okay, so 7x and 5x मैंने दोनों को इक्वल किया. ये boys is 8 more. Boys 8 ज़्यादा है. So दोनों को इक्वल करने के लिए to become equal these two, here we have to add plus 8. 8 ये ज़्यादा है. Boys are 8 more. So दोनों को इक्वल करने के लिए हमको यहाँ पे 8 करना पड़ेगा, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे ना. Yes. So now let me solve the sum. 5x is going to left hand side, minus 5x. 7x minus 5x is equal to 2x is equal to 8. So x is equal to 8 divided by 2. So x is equal to 4. Now boys 7x and girls 5x. So 28 and 8. So boys 28 मिल गए ना. So 8 ज़्यादा. Yes. Now this says that what is the total strength? So total strength 28 plus 20 is equal to 48. Okay. अगेन वही कंसेप्ट में रिवाइज कर देता हूँ कि यहाँ पे हमको ऐसा बोला है कि बॉयज़ है, बॉयज़ वो +8 है, गर्ल्स से 8 ज़्यादा है. सो यहाँ पे 7x है, हम दोनों को इक्वल करना है. यहाँ पे हम +8 करेंगे, सो ये तो 8 ऑलरेडी ज़्यादा है, +8 हो जाएंगे तो 8 + 8 16 ज़्यादा हो जाएंगे. सो हमें यहाँ पे +8 करना पड़ेगा ये दोनों को इक्वल करने के लिए. यहाँ पे गर्ल्स 8 कम है, तो यहाँ पे मैंने +8 कर दिया, तो ये दोनों इक्वल हो गया. ओके. Sum number 11. Baichung's father is 26 years younger than his grandfather. बाईचंग है, उसके फादर है वो उसके ग्रैंडफादर से 26 years कम है. एंड 29 years older than बाईचंग, और बाईचंग से 29 years older है. ओके. द सम ऑफ देयर ऑल थ्री एजेस इज 135. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बाईचंग की एज है उसको गैस कर लेते हैं. सो लेट वी गैस बाईचंग, वो एक स्टूडेंट है, उसकी एज है x. हम पहले बाईचंग की एज कंसीडर कर ली x. नाउ लेट वी सी. बाईचंग्स फादर इज 26 years ओल्डर देन बाईचंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 year ओल्डर देन बाईचंग. बाईचंग से कितने ओल्डर है? ओल्डर मीन्स बड़े, 29. सो फादर्स एज कितनी होगी? x + 29. ये बाईचंग की एज, ये उसके फादर की. नाउ ग्रैंडफादर की एज कितनी होगी? 26 years यंगर देन बाईचंग्स ग्रैंडफादर. वो 26 years छोटे हैं. बाईचंग्स फादर इज 26 years बाईचंग्स ग्रैंडफादर. बाईचंग्स के ग्रैंडफादर से 26 years छोटे हैं. ओके. तो उसके फादर्स की एज, ग्रैंडफादर की एज कितनी होगी? उसके फादर की एज प्लस 26 उसके ग्रैंडफादर की. बाईचंग्स इज x, father's age is x + 29 and grandfather's age is x + 29 + 26. okay. now ऐसा दिया है कि तीनों का एडिशन करो, so you will get the answer 135. so यहाँ पे मैंने ले लिया है बाईचंग्स age is x, his father's age is x + 29, his grandfather's age is x + 29 + 26. so 29 + 26 s + 55. ये दोनों का एडिशन करके यहाँ पे मैंने लिख दिया 55. now they said that addition of this all, ये सभी का एडिशन करो, सो यू विल गेट द आंसर 135. x + 29 plus x + 29 + 26, तीनों का एडिशन, सो 135. x + x + x 3x, 29 + 29 26, 84. now this 84 going to right side, so it become -84. so 135 minus 84, we get the answer 51. now 51 divided by 3, so 17. 17 3s are 51. Now Baijeng's age is 17 years. His father's age is x + 29. So 17 + 29, 46 years. Grandfather's age is x + 29 + 26. So 72 years. So this way we can find the ages of all. Now 15 years from now means plus 15 साल के बाद Ravi's age will be 4 times his present age. Ravi की age कितनी होगी? 4 times his present age. So what is Ravi's present age? Okay. So let me find out. First of all, Ravi's present age is x. So this is that 15 years from right now means अभी रवि की एज है 50x, तो x + 15 years के बाद रवि की एज अभी की एज है उससे 4 गुना हो जाएगी. सो 4x. नाउ इसमें से हमें x फाइंड करना है. 4x यहाँ पे है, सो ये x, दिस x is going to right hand side, so it become -x. so 4x - 3x, 4x - x is equal to 3x. 3x is equal to 15. Now this 3 is going to division of 15, so 15 divided by 3, so x is equal to 5 years. So Ravi की age है 5 years. Okay, so here we finished our
video. Next video we will see next examples. Thank you everyone. Have a nice day.